So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, as you can see the thumbnail, we are going to discuss about Supreme Court recently allowing passive euthanasia. Okay, so we'll be discussing what exactly is euthanasia and what is active euthanasia and passive euthanasia. Then we will be discussing about some previous judgments as well. Like not only this, even in the past we have seen some Supreme Court judgments with regards to euthanasia, or what are the opinions of the Supreme Court in this regard. We will also be discussing about a little bit about living will as well. Okay, so these things we'll be discussing it in today's class. So am I audible, visible? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? If yes, then please write yes. Things we'll be discussing it in today's class. So am I audible, visible? I think everything is fine. Okay, so let us begin. Yes, good afternoon, Parth, Sarah, Crazy Bella 19. Good afternoon. Yes, welcome to the class. So I think the slide is also visible. So let us begin. First of all, let us first discuss about the definition or meaning of euthanasia. Can anyone tell me what does it mean? Euthanasia का क्या मतलब होता है? If anyone can write in few lines, because I'm sure like few days back it was very much in the newspaper, and if you have read news articles then you should be able to answer these. Okay, what is euthanasia? क्या होता है ये? कोई बता सकता है? In few lines, yes. Yes, Shaurya Kapila. Good afternoon. Welcome to the class. Can anyone tell me euthanasia का क्या मतलब होता है? And so basically, the idea actually is that let's say a person is suffering from a very terminally ill disease. It is called, the term used generally is terminally ill disease. A person is terminally ill, है ना? Terminally ill मतलब वो ऐसा बीमार है, the person is ill or sick in such a way that coming back from that disease is almost nearly impossible. इन एक आदमी ऐसा बीमार है, or sometimes like a person is in vegetative state. These are the word used. Or let's say the person is in coma for years, कई सालों तक कोमा में है, and there is no scope that the person will come back as a healthy and live a life of dignity. Okay, in that case, if the government or the judiciary of any country allows the person to die in the sense that allow the relative, because the person is not able to take the decision, allow the close relative to take the decision of the death, that is called as euthanasia. Okay, एक आदमी ऐसा बीमार है, इतने या कोमा में है या वेजिटेटिव स्टेट में है कि वो सिर्फ जिंदा है, ना बोल सकता है, ना खा सकता है, कुछ नहीं कर सकता, बस लेटा हुआ है, उसको मेडिसिन मिल रहा है या जो भी उसको लाइफ सपोर्ट मिल रहा है, और डॉक्टर ने भी ये उम्मीद नहीं किया है कि इसको दोबारा वापस ला सकता है कई सालों तक उसी हालत में. अगर उस मुल्क की, उस कंट्री का कि गवर्नमेंट या जुडिशरी अलाउ करती है कि ठीक है उसको पास जो लाइफ सपोर्ट दिया जा रहा है उसको हटा लिया जाए ताकि वो इज्जत से उसकी डेथ हो जाए, उस चीज को यूथनेशिया कहते हैं. इज इट क्लियर? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली इट वाज देयर इन द न्यूज़, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट. आई होप इट इज क्लियर. यस और नो? क्लियर है? समझ में आया? And now, when you read the thumbnail, it says passive euthanasia. So, Supreme Court has allowed passive euthanasia and not active euthanasia. Okay. So, what is the difference between a passive and an active euthanasia? In a passive वाला allow किया है, but active euthanasia नहीं allow किया है. Okay, what does it mean? So basically, you can say euthanasia can be of two types, active and passive. Yes, passive means removing the life support. Yes, Shaurya Kapila, right? Huh? Active euthanasia and passive euthanasia. Okay. So, active, देखो उसमें दोनों aspect है, we'll be talking about that. And this is actually from ethical point of view, etc. and all. बहुत सारे एंगल से इसको देखा जा सकता है. And there are a lot of debates in this regard also. ठीक है? Some people agree or some people might not agree. तो let's say a person is terminally ill. वो ऐसा बीमार है, like the person is not able to speak, not able to think, or like it's just actually is alive. The person is alive, but like the person is not able to take any decision, etc.
टर्मिनली इल है या वेजिटेटिव स्टेट में. Okay. Now, for many years, let's say for many years. Now, active euthanasia means the person is given some, let's say, lethal injection or some medicine so that the person should immediately die. कि कोई आदमी बहुत पेन में है, excruciating pain, these are the words used, excruciating pain. मान लीजिए कोई आदमी बहुत तकलीफ में है या बहुत लंबा बीमार है, टर्मिनली इल है, वो आदमी खुद डिसाइड भी नहीं कर सकता है. सो उसके रिलेटिव्स इफ दे से कि ओके विल अलाउ एक्टिव यूथनेशिया, इन दैट इट मींस दैट कोई एक इंजेक्शन दे दिया गया, लीथल इंजेक्शन, सो दैट द पर्सन डाइज, और अ मेडिसिन इज गिवन, अ पॉइजन टाइप समथिंग, दैट द पर्सन शुड डाई. ओके. पैसिव यूथनेशिया मींस जस्ट विथड्रॉइंग द लाइफ सपोर्ट. withdrawing life support में क्या हो सकता है? Means for example, let's say whatever the devices that are connected to the body, है ना, or withdrawing the medicines, etc. and all. Now, तो अब इसमें बहुत सारे debates होते हैं whether it should be allowed or not and what are the benefits. So active euthanasia में क्या है? First thing is it appears that you are killing someone because you are giving an injection. So it is considered as like more unethical by many critics, or unethical or immoral, because many people believe that you are, if the person is not dying, then why are you injecting it? Leave it to God's will. अगर कोई आदमी नहीं मरा तो जबरदस्ती उसको इंजेक्शन देके नहीं मारो. ऊपर वाली की मर्जी होगी तो उसको बुला लेगा अपने पास. ओके, गॉड विल एक्चुअली कॉल बैक. Passive euthanasia means okay, ठीक है, we are not killing the one, but actually since the person is in pain, I will just withdraw all those devices that we are providing, because these life supports are actually human made. So the argument that is given in favor of passive euthanasia is that we are not interfering in God's will much. If the God will, if the God says he wants to like bring back the person, that will actually happen, and we are just withdrawing the life support. ठीक है, ये सब argument है. However, it said that some people, those who support active euthanasia, they say कि it might be less painful as compared to this, because here you are withdrawing the life support, so the person might feel pain while dying. So these are some of the arguments. ठीक है, so यही सब बात है that okay, so है ना, यही बात हो रही है. तो euthanasia means the painless killing of a person or an animal suffering from an incurable or painful disease or an irreversible coma, means the person cannot come back from coma. Okay, this is called as euthanasia. नहीं, आदमी उस बीमारी से वापस नहीं आ सकता, कोई स्कोप नहीं बचा. So active euthanasia, I've told you, directly causing patient's death through deliberate action like lethal injection or overdose of drug. जानबूझ को ऐसी दवा दी जा रही जिससे उसकी डेथ हो जाए. ओके, तो आपको पता होना चाहिए एक्टिव यूथनेशिया इज बैंड इन इंडिया. देयर इज नो स्कोप ऑफ एक्टिव यूथनेशिया बिकॉज इट क्लियरली सेज, मतलब द आइडिया इज दैट यू आर किलिंग समवन एंड यू आर इंटरफेयरिंग इन गॉड्स विल. पैसिव यूथनेशिया में जस्ट यू आर विड्रॉइंग द लाइफ सपोर्ट, है ना, टर्निंग ऑफ वेंटिलेटर, स्टॉपिंग मेडिकेशन, जो दवा वगैरह जो ट्यूब लगाए बॉडी में सब हटा लीजिए, है ना, वेंटिलेटर हटा लीजिए, लाइक दैट, है ना. इन्वॉल्व्स ओमिशन, नॉट डूइंग समथिंग. यानी आप, यू आर नॉट किलिंग द पर्सन, यस, जस्ट यू आर विड्रॉइंग इट. ठीक है. सो whether passive euthanasia is allowed or not, so the answer is allowed by the Supreme Court in case to case basis. That should be the answer. ठीक है, ये एकदम ध्यान रखना है. So if someone is asking about active and passive euthanasia, whether active and passive euthanasia being allowed, so active euthanasia नॉट अलाउड एट ऑल इन इंडिया. ठीक है, किसी भी हाल में एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है. आप किसी को इंजेक्शन देके नहीं मार सकते हो इसलिए कि वो पेन में. बट व्हेन इट कम्स टू पैसिव यूथनेशिया, it is allowed on case to case basis, and for that you have to take permission from the court, from high courts and Supreme Court. ठीक है, ये होगा आंसर.
This has to be very crystal clear. Why I'm saying, because आप बोलोगे सर पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दिया गया इस बार, this time we have seen. So please do not say that blanket permission is allowed. Blanket permission of passive euthanasia is not allowed. ब्लैंकेट परमिशन नहीं, किसी भी केस में आप जाओ अच्छा पैसिव यूथनेशिया अलाउड है तो चलो कर देते हैं, ब्लैंकेट केस में नहीं अलाउड है. दिस इज द ओपिनियन, राइट? So the answer is it is allowed on case to case basis depending upon the court whether the court allow in that case or not. उस पार्टिकुलर केस में अदालत अलाउ करती है कि नहीं, इजाजत देती है कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है. ठीक है? टिल नाउ इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आई होप if everything is clear please write yes. ठीक है? Now recently we have seen ये 15 मार्च का आपने देखा होगा सब काफी एडिटोरियल्स आए. Why did Supreme Court allow passive euthanasia? है ना? The person is actually Harish Rana, है ना? I'm sure you must be aware. He was in pain for the past 13 years. तो इसमें एक्टिव पैसिव यूथनेशिया का डेफिनेशन भी बताया, राइट टू डाई विद डिग्निटी वगैरह की भी बात कही गई है. सो ऑन 11th March द इंडियाज फर्स्ट जुडिशियल अप्रूवल ऑफ पैसिव यूथनेशिया. देखो, in the past the Supreme Court has passed an order regarding passive euthanasia, but final permission for a passive euthanasia has been given for the first time. पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ये लिख दिया कि हाँ ठीक है, इनका लाइफ ले लीजिए, आप विड्रॉ कर लीजिए, मतलब लाइफ सपोर्ट विड्रॉ कर लीजिए. The Supreme Court allowed withdrawal of life support for Mr. Harish Rana, 32, who had been in vegetative state for nearly 13 years following a fall. So ये मतलब 19-20 साल के थे उस टाइम पर, आई थिंक 20 के आसपास थे, 19-20 years के आसपास. So almost 13 years back. Okay, so right now he was actually 32 years old. 13 years back उनके साथ एक हादसा हो गया था and he fell from I think fourth floor से वो गिर गए थे, and because of which the person went in vegetative state. Again the same thing, vegetative state भी लिखते हैं, कहीं पे कोमा लिख रहे हैं. Vegetative state means the person was alive, lying on the bed, but was not able to speak or not able to comprehend, think or anything. नहीं कुछ बोल सकता था, नहीं खा सकता था, नहीं, बट लेकिन वो सिर्फ अलाइव था और उसको मेडिकेशन चल रहा था. एंड एक्चुअली so the two judgments, Justice J.B. Padwala and K.V. Vishwanathan, said that medical boards say permission court, when the matter went to the Supreme Court asked the medical boards, the doctors, to inquire and check what is the condition. And Mr. Rana's family had both said that treatment had become futile. Futile मतलब कोई काम का नहीं है, not effective. So the family also, because of course the final role is of family, the parents, because the person cannot take the decision. वो आदमी उस हालत में नहीं है कि खुद डिसीजन ले ले. So of course the closest one will be the family, है ना? And of course the medical boards comprising of doctors have also said that there is no scope of treatment. Futile हो गया, बहुत इलाज कराया गया, कुछ नहीं हो सकता, and was not in his best interest. It held that right to life includes right to die with dignity. This is very important. Right to life also includes right to die with dignity. Okay, which article of the Indian Constitution is being talked about? Which article of the Indian Constitution? Please tell me. Yes, Article 21. Yes, Shaurya and Parth, you both are right. Article 21. Okay. So when we talk about it, when we talk about Article 21, you should know the Article 21 talks about what? Right to life and personal liberty. No person, states cannot deny, like right to life and personal liberty cannot be denied, etc. So right to life also means, the Supreme Court said, right to die with dignity. Supreme Court did not say right to die. Supreme Court said right to die with dignity. ये important है. Right to die with dignity. मतलब इज्जत से मरना, in the sense, if a person is actually suffering from a very painful disease and let's say for many years the person is actually in vegetative state and then the person dies in a painful death, then it is better that that person should be given a dignified death. यानी इज्जत से मौत हो, एकदम बहुत तकलीफ में, बहुत एक्सट्रीमली पेन में और वो जिंदा भी है, तो उसका मतलब कोई फायदा नहीं है ना. So that is what it means, right to die. So you should say right to life and right to die with dignity. Both are under Article 21. Okay, just we have discussed that right to life also means right to live with dignity. हाँ.
राइट टू डाई इज नॉट अलाउड. यस, सम ऑफ शर्मा, दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि राइट टू डाई नहीं अलाउड है. ठीक है, right to die is not a fundamental right. Right to die with dignity in case of passive euthanasia is allowed in case to case basis. ठीक है, ठीक है, because right to die अगर allow हो जाएगा तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. So people will start killing each other and many other things can happen. So simplistic view holds that passive euthanasia involves a negative act or an omission, such that just withdrawing or withholding the life support. है ना, इन जो लाइफ सपोर्ट उसको हटा दिया गया. एंड एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि यू आर एडमिनिस्ट्रिंग अ लीगल रीथर इंजेक्शन व्हिच इज इलीगल इन इंडिया, इलीगल इन इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज. कि आप उसको जान मार रहे हो इंजेक्शन दे करके, तो उससे अच्छा है कि विड्रॉ कर लो. Okay, the court noted that withdrawing life-sustaining treatment such as switching off ventilator is a positive act. Relying on simplistic act version test could wrongly predict सकता है ना. Justice Jabipal explained the distinction lies the source of them. Activity introduce new external emergency. Passive euthanasia does not involve risk of death, but the removal of an artificial barrier. तो उन्होंने कहा कि है ना, withdrawing life-sustaining treatment word नहीं यूज किया जाए, ये वाला word यूज किया जाए. Removal of an artificial barrier, which allows the natural trajectory of life to continue and reach its inevitable conclusion. When a ventilator is withdrawn, that is accidental only in the sense that patient dies sooner than they would have if the machine had continued. और वही सब बात है, इतना डिटेल आपको नहीं जाना है लीगल टर्म्स में, बट ये समझना है कि आर्टिफिशियल ऑफ रिमूवल ऑफ एन आर्टिफिशियल बैरियर, अगर वो बैरियर हटा दी जाए तो आदमी की अपने आप नेचुरल डेथ हो जाएगी. सो वी कैन से दैट वी आर नॉट इंटरफेयरिंग इन गॉड्स विल, है ना. यानी अगर हम सिर्फ जो है उसको विड्रॉ कर ले रहे हैं. द कोर्ट सेड दैट देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन द स्टेट्स इंटरेस्ट प्रिजर्विंग लाइफ मस्ट राइट टू डाई विद डिग्निटी. वही राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात है. Temporarily keeping alive a terminally ill patient who is brain dead or in a person solely because the doctors are leveraging the technology convinced medicine cannot be fully compatible with the constitutional idea of dignity. ये important है. देखो बता कह रहे हैं कि बच्चा जो था ब्रेन डेड था, terminally ill है, it cannot be brought back. Okay, so the person was alive because of technological advancement. सिर्फ मेडिसिन था, मेडिसिन पे मेडिसिन दिया जा रहा है. And what is happening is of course like maybe the doctors will have like can earn or etc and all, है ना. तो डॉक्टर्स के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, तो उन्होंने लगा दिया, तो बच्चा जिंदा है. बट द थिंग इज लाइक the person is in very much in pain, है ना. And so that's why it is better to have this is actually against the idea of constitutional idea of dignity, है ना, कि dignity dignified life नहीं है ना. So basically if someone is living a life of pain, extreme pain, excruciating pain, कोई बंदा बहुत ज्यादा तकलीफ में है, ओके, तो दिस इज नॉट अ डिग्निफाइड लाइफ. सो ये राइट टू लिव विद डिग्निटी को भी नहीं फुलफिल कर रहा है. राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट, इज्जत से जिंदगी जीना अंडर आर्टिकल 21, दिस इज नॉट फॉलोइंग इट, राइट, बिकॉज द पर्सन इज इन एक्सट्रीम पेन या द पर्सन एक्चुअली इज नॉट एबल टू लिव प्रॉपरली. जब वो ब्रेन डेड है, वो कुछ काम ही ना बोल सकता, ना एक्चुअली रिस्पॉन्ड कर सकता है. सो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट लिविंग विद डिग्निटी. दैट इज व्हाट द जज सेड, है ना, है ना. द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इररिवर्सिबल मेडिकल कंडीशन, यानी वापस ठीक नहीं किया सकता है ना. दैट इज व्हाट. सो जज ने कहा कि पैसिव यूथनेशिया वर्ड ऑब्सोलीट हो गया, यानी पुराना हो गया. वी शुड नॉट बी यूजिंग दिस वर्ड. इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड बी यूजिंग द वर्ड विथड्रॉइंग और विथहोल्डिंग ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट. मतलब पैसिव यूथनेशिया इज दिस, बात तो वही है, लेकिन द जज हैज सेड दैट इंस्टेड ऑफ पैसिव यूथनेशिया वी शुड यूज दिस लैंग्वेज, है ना, विथड्रॉइंग और विथहोल्डिंग ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना. सो आर्टिकल 21 पे वी हैव टेकन अ क्लास, प्लीज वॉच दिस. इसको सर्च करना एंड यू विल गेट दिस वीडियो. प्लीज वॉच इट, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, है ना. So the best interest inquest does not ask whether it is the patient's best interest to die, but whether continuing life support through clinically assisted nutrition and hydration was done in Mr. वही है, clinically assisted nutrition and hydration. मतलब भाई उन पे पाइप वगैरह लगाई गई थी, हम लोग डिस्कस करेंगे. उनमें बहुत सारे मेडिकल पाइप जिसकी वजह से न्यूट्रिशन वगैरह जा रहा था, बट वो 13 ईयर्स तक लाइक देयर वाज नो स्कोप ऑफ रिकवरी, है ना, है ना. The court explained that is best is inquiry and in strong presumption. ठीक है, इसमें इतना डिटेल नहीं जाना. That is more than enough. So there were some previous judgments like Gyan Kaur versus State of Punjab case also talked about right of a patient to die with dignity. इसकी बात कही गई थी, है ना. So there were some news, है ना, like in 1996 Law Commission also recommended that a terminally ill patient to discontinue medical treatment, okay, should not attract criminal liability. Why criminal liability? Because actually I'm sure you must be aware killing yourself was a criminal offense, है ना, even under IPC and now under BNS. You cannot kill yourself because if you fail to kill yourself, then a case will be registered against you.
ठीक है, तो बट इसमें ये था, बट हेयर इट वाज टॉकिंग अबाउट द लॉ कमीशन ने एडवाइस दिया था. लॉ कमीशन ऑलवेज गिव्स एडवाइस, है ना. Something related with passive euthanasia they talked about. Now, the most tragic incident we have seen when we talk about passive euthanasia is Aruna Shanbaug case of 2011. Anyone aware of this? Did the Supreme Court allow passive euthanasia in case of Aruna Shanbaug? Very painful incident. And whenever we talk about euthanasia, the most important judgment that comes to our mind is this Aruna Shanbaug case. Anyone? नहीं सुना है. बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था. विल डिस्कस अबाउट इट. अरुणा शानबाग केस इन 2018 फिर एक आया था कॉमन कॉज केस. देन इन 2023 द सुप्रीम कोर्ट लिटिल बिट चेंज दिस और ease the concept. Supreme Court did not allow, yes, but Supreme Court upheld the idea of passive euthanasia. But in that particular case, the Supreme Court did not allow. What was the case? We'll talk. Nurse from Noida. I'm not sure about Noida, but I think the incident happened in Mumbai. We'll talk. ठीक है, उसको डिस्कस करते. Then एक बिल भी लाया गया था, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट, प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर बिल, बट इट्स स्टिल अ बिल एंड नो प्रोसेस, नो फॉलो अप हैज बीन डन. मींस इट इज येट टू बिकम एन एक्ट. तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं दिस वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ अरुणा शानबाग केस, एंड देन विल टॉक अबाउट कॉमन कॉज. ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन कॉज केस बता देते हैं. देखो कॉमन कॉज केस 2018 था. एनजीओ, दिस इज एनजीओ कॉल्ड एज कॉमन कॉज. ओके, so they had filed a petition in 2018 and the Supreme Court said that right to life includes right to a dignified death. So Supreme Court said that in general we are allowing passive euthanasia. We are saying that yes, passive euthanasia is allowed, but active euthanasia is illegal. But again, you have to take permission from the court while taking passive euthanasia. So active euthanasia not allowed, passive euthanasia allowed on case to case basis. ठीक है. In common cause case, the Supreme Court also gave the concept of living will. ये बहुत important है. What is living will? ये क्या होता है? Because these all are related with each other, that's why we are discussing living will. Anyone? What is living will? जीने की इच्छा, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं. लिविंग विल मैं बताता हूं, उसमें ऑफ कोर्स लीगल डॉक्यूमेंट ही होता है, बट वी क्रिएट they can in there will create defections. देखो होता क्या, फॉर एग्जांपल कोई आदमी, फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ पर्सन हु इज 80 years old. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. एक आदमी है, वो 80 साल के, ओके, राइट नाउ ही इज हेल्दी. यस संभव, यस, ठीक है, यू आर राइट लीडर. हाँ, इसमें है क्या चीज, राइट नाउ द पर्सन इज हेल्दी, इनके बेटा है, सन इज देयर, लेट्स से सन और डॉटर इज देयर, लेट्स से मान लो सन है, कोई भी XYZ इनके बेटा है, his son is let's say 55 years old. ठीक है. This person is telling his son that right now I am healthy, but since I have become old, maybe in future I will suffer from some disease which will be which I might become terminally ill. So in that case, you can withdraw life support. एंड आई एम गिविंग इन राइटिंग, मैं लिख के दे रहा हूं ये बात. एक आदमी जो कि अभी परफेक्टली हेल्दी हैं, लेकिन उनको ये एहसास हो रहा है कि कुछ दिन बाद जो है हो सकता है बीमार पड़ जाए और वेजिटेटिव हो जाए. ठीक है, तो उस केस में वो अपने बच्चे को लिख के दे रहे हैं कि अगर हम ऐसी बीमारी में आए तो आप मेरा इतना लंबा इलाज कराने की जरूरत नहीं है, तो मेरा लाइफ सपोर्ट विड्रॉ कर लेना. ओके, दिस इज कॉल्ड एज लिविंग विल. इसको कहते हैं एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव. You got it? Living will. Living will means the person is right now healthy, but it is actually giving a wasiyat. We call it as wasiyat, you know. है ना, मरने से पहले या बीमार होने से पहले, like in English, like that the person is saying that okay, if I become ill and I become such a ill, let's say I go to the coma or terminal, I become terminally ill because I have become old. In that case, do not waste money on my medical expenses. You can withdraw the life support. That's called as living will. Now the Supreme Court legalized living will, but it actually put some condition. ठीक है, so condition थोड़ा स्टिक लगा दिया था जब 2018 में this judgment came regarding that you have to like है ना get permission from the district judge, district court. Then later on in 2023 it was little bit diluted or it was made easier. ठीक है,
और ऐसे नहीं है सिर्फ ओरली या कोई लिख देंगे कागज पे तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से परमिशन लेकर के वो लिविंग विल लिखवाया जाता है. सो यू गॉट द कॉन्सेप्ट, है ना? यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल, समझ में आया? यस और नो? यस, ओके. नाउ ये कॉमन कॉज केस वी हैव डिस्कस, ज्ञान कौर केस है ना, ये हो गया, है ना? व्हाट इज द लिविंग विल एंड शुड इट कंटेन? तो ये 2018 में जजमेंट आता है कॉमन कॉज. कॉमन कॉज इज एन एनजीओ दैट हैड फाइल्ड अ पिटीशन, है ना? द विल shall be attested by two independent witness, someone had written in the comment also, yes, and preferably countersigned by a judicial magistrate of first kind, first class, यानी जज से टू इंडिपेंडेंट विटनेस साइन करेंगे एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है उसको फाइनल अप्रूवल देंगे. However, it was found to be difficult. So in 2018 के बाद 2023 the Supreme Court actually changed it. थोड़ा सा living will was made easier, and the Supreme Court now said that yes, you can be assigned by an adult in sound mind in front of two witness plus notary or any gazetted officer instead of a judicial magistrate. कोई जज नहीं भी है, कोई भी gazetted officer है ना, तो उनके साइन से काम चल जाएगा. So it made actually comparatively easier, है ना? The requirement of district magistrate to dominate secondary medical board was removed also. ठीक है? So these are the things you should be knowing about. तो इसको भी हटा दिया. Okay? So in 2023 the living will became much easier, or legalizing it or legal implementation of it. Now we are talking about Aruna Shanbaug case जो मैंने आपको बताया था. This is the most painful judgments, painful event with regards to the judgment of Supreme Court of passive euthanasia. What happened was there was an Indian nurse, okay, and she was 42 years in vegetative state. What happened was in 1973 she was working in King Edward Memorial Hospital in Parel, Mumbai, and she was assaulted by a janitor. जो झाड़ू पोछा वगैरह लगाते हैं ना, जो क्लीन करने वाले, है ना, यहाँ पे क्लीनर समझ लो. Okay, and when she was assaulted, actually we're not going very much in detail because of course everything cannot be discussed on YouTube. You can read it. Okay, and because of which when the assault happened, and it is said that actually she was tied, her neck was tied, etc. and all, and because of which she went in vegetative state because the oxygen to the brain was cut off, and because of which she was in vegetative state. 1973 say she died 42 years later. For 42 years she was actually in vegetative state. ये बहुत ही like it's actually very painful event. So what happened was actually 1973 में incident हुआ. In 2011, 4 years before her death, 2011 में there's a journalist called as Pinky Virani. She files a petition at the Supreme Court that she should be allowed, like passive euthanasia should be allowed. So 42 years thi kahan? Where was she? Aruna Shanbaug. So basically from 1973, when she met with such a brutal crime, she since then till 2011 she was actually the same hospital where she used to work, and that was actually the hospital nurse and the other colleagues used to feed her. उनकी हेल्प अगर कर देते थे because she was in vegetative state. So 2011 the matter went to the Supreme Court, and Supreme Court said that yes, the concept of passive euthanasia we are allowing the concept of passive euthanasia in India. However, in that particular case the Supreme Court said no, we will not allow Aruna Shanbaug passive euthanasia. Why? This is the KEM hospital in Parel in Mumbai where this Aruna Shanbaug incident happened. Okay, so you can read about this. So that is what it is said, that her like neck was choked by a dog chain, and because of which the oxygen cut off in the brain and she went in vegetative state. Okay, so janitor, the person, the accused was actually a janitor वही जो साफ करने वाले थे, है ना. Retrospective application of law नहीं retrospective application नहीं, वैसा कुछ नहीं. The reason was actually कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, बट इट शुड बी डन बाय द हेल्प, बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम द रिलेटिव और नेक्स्ट फ्रेंड. So life support should be taken by the permission of parents, a spouse, or close relative.
ठीक है. बट इट इज सेड दैट शायद अरुणा शर्मा के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो अवेलेबल नहीं थे, या लाइक सिंस 42 years had passed, no one was coming close to her or something like that. So in that case, next friend, जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है, उसकी परमिशन के बिना होगा. So Pinky Virani, the journalist, said that I am the closest friend, but the Supreme Court said that no, you are not the next friend. ठीक है, आप नेक्स्ट फ्रेंड कैसे हो जाओगे? जस्ट okay, we agree that yes, you might be from humanitarian perspective, you might be filing petition, etc., but you are not a next friend. And who would be the next friend then? So from 1973 onwards till 2011, when the Supreme Court was hearing the matter, she was in the same hospital where she used to work, KEM hospital, and she used to live in a bed because she actually was in vegetative state, and she was supported by the same nurse of the hospital, nurse and the staffs of the same hospital. So in that case, the Supreme Court said the next friend should be these people, the nurses and the staff of the KEM hospital. And these nurses and staff, they denied permission, that no, we will not allow her passive euthanasia. Okay? So the Supreme Court said that the concept of passive euthanasia we are allowing, but here we cannot consider Pinky Virani, the journalist, to be the next friend. And the next friend should be the staffs, those who are taking care of the Aruna Shanbaug in the same hospital, the staffs and the nurses. And they said no. And at the KEM hospital, staff wished Aruna Shanbaug to be allowed to live. And Virani's petition to withdraw life support was declined. So is it clear? The concept of passive euthanasia was allowed by the Supreme Court, but for Aruna Shanbaug, they did not allow because the next friend was not giving the permission. And the next friend here were the KEM hospital's staff. Is it clear? Clear here till now? I hope. Yes. Okay. And what happened was, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उनका फाइनली जो है 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. So 2015 में she actually died because she developed pneumonia etc. और फिर वो naturally उनकी डेथ हो गई. So means she was in vegetative state for 42 years. Okay, है ना. Withdrawal of life support कब हो सकता है? Only when a high court or a supreme court gives the permission on the recommendation of medical board. Medical board होते हैं, डॉक्टर्स बताएंगे, ठीक है. And then the high court will give the permission, otherwise you have to go file an appeal in the Supreme Court. ठीक है. Best interest of the patient. So that is what you should be knowing. And yes, we can learn from this also that we should be grateful to God for whatever the God has given. Why? Because at least we have not suffered something like this. If we are living a dignified life, then of course we have to be grateful to God, because there are a lot of cases, you know. How to get access to your paid batch? Ridhibish, is call on this number and ask them. I'm teaching in some batches, 3-4 batches, I think, as far as I remember. Ask them in which batch. I'm actually teaching in online batch, most of the online batches. You ask them in which batch I'm teaching, and they will help you. ठीक है, इसमें call करके पूछ लेना. Okay, so that's what one line we can learn from this event of she has been in there 42 years vegetative state. कितना painful होगा. So you have to be grateful to God for whatever God has given. If we are able to live properly, then of course that is very important. तो यही दो एंटिटी में आर्टिकल थी. Harish Rana can die because Aruna Shanbaug lived. Lived मतलब वही Aruna Shanbaug केस हुआ, and we talked about it, and euthanasia etc. So that is what is being talked about. वही इवेंट है. She became suffered a brutal attack in 1973. No, I do not teach offline mode, Sambhav. I am only teaching online. ठीक है. ठीक है, लास्टिंग डैमेज एटसेट्रा. ठीक है, तो आप पढ़ लेना. वैसे मैंने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. सो है ना, 2011 में द सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज्ड पैसिव यूथनेशिया ऑन केस टू केस बेसिस, बट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द नियर रिलेटिव, है ना. एंड विरानी क्लेम टू बी द नेक्स्ट फ्रेंड, बट ऑफ कोर्स द सुप्रीम कोर्ट सेड नो, यू आर नॉट अ नेक्स्ट फ्रेंड. ठीक है, ठीक है. फिर 2018 में कॉमन कॉज, ये सब लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना. अलाउड लिविंग विल, कॉमन कॉज केस. वेजिटेटिव स्टेट मतलब वही मैंने बता दिया कि आदमी इसको नहीं सकता, बस जिंदा है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है. ओके, इन दैट लाइक बिकॉज ऑफ कट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन डेड वगैरह इसको कहते हैं. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. ठीक है, अब देखो क्या एक चीज और लिखा हुआ है ना, कि जो बच्चा था हरीश राणा, ओके, वाज अ स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी. ही फेल फ्रॉम द 4th floor in 2013.
एंड उस वक्त वो 19-20 साल का था, एंड नाउ ही वाज अराउंड 32 आफ्टर 13 years. सो उसको जो है ना ये है, दिस इज द ट्यूब, ट्रैशेस्टोमी ट्यूब फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए, एंड गैस्ट्रोजेजोनोस्टोमी ट्यूब फॉर फीडिंग. तो ऐसा कुछ होता है, मैंने एआई से जनरेट करवाया फोटो. तो ये सांस लेने के लिए है ना, फॉर टेकिंग ऑक्सीजन, और ये फीडिंग के लिए. ठीक है, कंटिन्यूअस 13 years तक ऐसे लगा हुआ है. और है ना, एक ये वाला है ट्रैशेस्टोमी ट्यूब, ये वाला होगा, दिस वन ऊपर वाला, और नीचे वाला जो खाना प्रोवाइड करने के लिए गैस्ट्रोजेजोंटोमी जेजोनोस्टोमी ट्यूब. ठीक है, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, दिस मेडिकल टर्म है, डॉक्टर्स बताएंगे. सो ये दोनों वही था कि उनको सांस लेने के लिए और खाना खाने के लिए ट्यूब लगाया गया था. तो कब तक? 13 years तक लगा हुआ था, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज नो स्कोप ऑफ रिकवरी. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. हाँ, one more thing you should be knowing. In the same case, the Delhi High Court did not allow. A matter first went to the Delhi High Court, but the Delhi High Court had not given the permission. है ना? But now when the matter went to the Supreme Court heard the two medical boards' opinion and they finally passed the judgment. है ना? है ना? So he had brain damage and huge bed sores, etc. and all. So that is what you should be knowing. है ना? And this has been performed now. The Supreme Court has said to move to the AIMS Delhi to perform this. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको एम्स दिल्ली ले जाया जाए और वहां उनकी इज्जत से इमोशनल फेयरवेल किया जाए. ओके, दैट इज व्हाट you should be knowing about. Okay, and Ghalib to Shakespeare, Supreme Court stressed with right to die with dignity. It means that the Supreme Court judges quoted Ghalib, Mirza Ghalib, and Shakespeare, William Shakespeare also in this. Okay, तो ये अब दुनिया से चले गए. Okay, you can read about it in detail. ठीक है. And when we are talking about Article 21, ये वाला देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. आर्टिकल 21 अक्सर न्यूज में रहता है. टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन वाटर. ये सब आता है 21 के अंदर. ठीक है, एंड यस, दीज आर इंपॉर्टेंट वंस, यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस. सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस. है ना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया. सो वी आर स्टॉपिंग दिस क्लास हियर. प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.